humerus, the radius, and the ulna. So there are actually three articulations involved with the elbow joint. You've got an articulation between the humerus and the ulna, so that's the humero-ulnar joint. You've got an articulation between the humerus and the radius, so that's the humeroradial joint. And you've also got an articulation between the radius and the ulna, so this is a proximal radio-ulnar joint, because you've also got a distal radio-ulnar joint. So there's three bones involved and you've got three articulations. So we'll just take a quick look at some of the features of the articulating surfaces of the bones before we move on to things like the joint capsule and ligaments. So the articulating area of the humerus has two parts. You've got the trochlear and the capitulum. So the trochlear is medial, and this articulates with the trochlear notch of the ulna, and the capitulum is this bit here, and this articulates with the head of the radius, and this bit is lateral. So you've got the capitulum and the trochlear articulating with the head of the radius and the trochlear notch of the ulna, respectively. So just a few other points about the distal humerus, which are worth noting. You've got three fossae, so you've got the coronoid fossa here, the radial fossa here, and on the back of the humerus, posteriorly, you've got the olecranon fossa. So three fossae, and you've got the epicondyles, so you've got the lateral and the medial epicondyles. So let's just take a quick look at the ulna and the radius. So I've just switched over to an isolated view of the ulna. So you can see this notch here. This is the trochlear notch, and this is what articulates with the trochlear of the humerus. And just below this notch, you can see this sort of depression here. This is another notch called the radial notch, and this articulates with the head of the radius. And at this articulation, you get pronation and supination. This little bit here is called the coronoid process, and if I rotate the ulna posteriorly, we can have this is the olecranon process. So those are a few features of the ulna which are worth noting before I go on to talk about other features of the elbow joint. So I've just switched back to this view, and you can see the head of the radius articulating with the ulna at that little notch I showed you, the radial notch on the ulna. And so now you can see the हम आते हैं एल्बो जॉइंट के मोमेंट पर। तो देखिए अभी ये हमारा एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट है, और जैसे ही मैं इन दोनों आर्म और फोर आर्म इन दोनों के बीच का एंगल कम करता हूं, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, फ्लेक्शन। एंड देखिए ये देखिए एंगल कम हो रहा है, मतलब दिस इज फोर आर्म, दिस इज आर्म, एंड फोर आर्म और आर्म के बीच का एंगल अगर कम हो रहा है, मतलब दिस इज फ्लेक्शन। एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो गया, यानी कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। एंड अब आप खुद यहाँ पे आइए कि जब मैंने एल्बो जॉइंट को ऐसे एक्सटेंड करा दिया, तो ओवरऑल जो ये तीनों बोनी पॉइंट होते हैं ना, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल और ओलेक्रानन प्रोसेस, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर। देखिए ये पूरा एक्सटेंडेड एल्बो है, एंड आप अपने फिंगर से यहाँ पर फील कीजिए, जो तीनों बोनी प्रोमिनेंस है ना, उन्हें आप फील कीजिए, आपको वो तीनों बोनी प्रोमिनेंस एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, एकदम सीधी लाइन में दिखेंगे। एंड जैसे ही मैं एल्बो को फ्लेक्स करवाता हूं, फ्लेक्स मतलब कि एंगल कम करना है फोर आर्म और आर्म का, तो देखिए एंगल कम हुआ, एंड फिर अब आप इन तीनों बोनी प्रोमिनेंस को देखिए, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, ये मीडियल हो गया, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, एंड दिस इज ओलेक्रानन प्रोसेस। ओवरऑल जब मैंने एल्बो को फ्लेक्स करवाया, इन दोनों के बीच का एंगल कम किया, तो ये तीनों के तीनों बोनी प्रोमिनेंस, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में दिखते हैं।
ओवरऑल पूरी बात क्या है कि जब मैंने फ्लेक्स कराया, दिस इज फ्लेक्स कंडीशन, तो ट्राइंगल की फॉर्म में दिखेंगे, और जब मैं एल्बो को एक्सटेंड कराऊंगा, एल्बो पूरा का पूरा सीधा करा दूंगा, तो ये तीनों बोनी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं। ओके গোসল করে জুম্মা নামাজ